Team UPAI welcomes you to the orientation module on artificial intelligence. दोस्तों, पिछले लेक्चर में सुबह उठकर तैयार होने की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, प्रेडिक्शन के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। इसको आज हम कंप्यूटर की भाषा में समझेंगे कि कंप्यूटर इसको कैसे देखता है। फॉर अ कंप्यूटर, डेटा इज द सेट ऑफ नॉलेज. द डेटा इज द set of clothes available in your wardrobe, temperature, the weather forecast. Now the computer needs to take a decision. Decision making to a computer would look like, if it is raining, pick up the rain jacket. If it is cold, then pick up a warm jacket. This is called algorithm. How do we define algorithm? Algorithm is a set of instructions which a computer uses to perform tasks based on the understanding of available alternatives. The facts are data, and the steps involved in the transformation of this data into information is termed as an algorithm. तो हमने समझा कि निर्देशों के संग्रह को एल्गोरिदम कहते हैं। दोस्तों, एल्गोरिदम क्या है? निर्देशों का एक संग्रह मात्र है। कंप्यूटर अपने पास उपलब्ध विकल्पों को देखते हुए उस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। You must keep in mind that an algorithm is not a computer code. It is written in plain English and maybe in the form of a flowchart with shapes and arrows, or it may be a numbered list. आपको याद रखना है कि एल्गोरिदम कोई कंप्यूटर कोड नहीं है। ये सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है और इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसा कि आप अभी इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि फ्लो चार्ट एरोज और शेप्स जैसे रोम्बस, रेक्टेंगल, सर्कल आदि के साथ बनाया जा सकता है। दिस एल्गोरिदम टेल्स कंप्यूटर हाउ टू ट्रांसफॉर्म द डेटा दैट इज अ सेट ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। फॉर पीपल, द फैक्ट्स आर डेटा एंड द यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। एंड फॉर मशीन्स एंड कंप्यूटर्स, द फैक्ट्स आर डेटा and the useful information is the instructions you give. So for the process of getting dressed in the morning, we have understood the data for the computer is your clothes, the season, the temperature outside, the weather forecast. And the algorithm is the instructions you give to it to choose your clothes. And now comes the process of putting on the clothes. The algorithm for this process will be, for each piece of clothing, put it on, and finally the last step will be step out for work. जैसे आप तैयार होकर बाहर निकले तो एल्गोरिदम का अंतिम पायदान होगा। आपके लिए आउटपुट क्या है? आउटपुट है आप तैयार होकर काम के लिए बाहर निकले। फॉर अ कंप्यूटर, व्हाट इज आउटपुट? फॉर अ कंप्यूटर, आउटपुट इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग which is either displayed on screen or played on speaker as audio. Friends, you will come across these words data, information, knowledge, input, output as you learn more about computers, AI and machine learning. Hence, this very basic introductory lecture for you through our expert. Artificial intelligence has taken the world by storm, and it's all because of the algorithms powering it. In this presentation, we would learn how algorithms play a crucial role in making it possible for machines to learn and adapt to new situations. एल्गोरिदम मशीनों को नई परिस्थितियों का सीखने और अनुकरण करना संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। The algorithms are instrumental in AI, as they are the backbone of machine learning, natural language processing, computer vision, and other key AI technologies. Ma'am, start. Algorithms AI में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे मशीन सीखने, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, कंप्यूटर दृष्टि और अन्य मुख्य AI प्रौद्योगिकियों की रीढ़ हैं। Algorithms and flowcharts are crucial in programming for developing efficient and error-free programs. एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि
ये सहज एवं त्रुटिहीन प्रोग्राम विकसित करने में सहायता करते हैं। An algorithm is a set of rules for resolving a problem at hand, while a flowchart is a diagrammatic representation of an algorithm. एक एल्गोरिदम किसी समस्या को हल करने के लिए निर्धारित नियमों का एक सेट होता है, जबकि फ्लोचार्ट एक एल्गोरिदम के यथार्थ का प्रतिनिधित्व होता है। Algorithms help AI-based systems in processing vast amounts of data, identify patterns, and make predictions, all in real time. In fact, it's the effectiveness of these algorithms that determines the success of any AI system. Algorithms in flowchart assist programmers to develop solutions quickly and accurately by decomposing complex problems into smaller steps. एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट प्रोग्रामर को समस्याओं को छोटे चरणों में विभाजित करके तेजी और सटीकता के साथ समाधान विकसित करने में सहायता करते हैं। From Siri to self-driving cars, algorithms enable machines to perform complex tasks. The algorithms serve as the building blocks of AI, allowing machines to learn, reason, and adapt to their environment. सीरी से सेल्फ ड्राइविंग कारों तक एल्गोरिदम मशीनों को कॉम्प्लेक्स कार्यों को करने में सक्षम बनाते हैं। ये एल्गोरिदम एआई के निर्माण खेल की भूमिका निभाते हैं, जिससे मशीनें सीख सकती हैं, तर्क कर सकती हैं और अपने पर्यावरण के लिए अनुकूल बन सकती हैं। The fundamental basis of AI technology is an algorithm, which have enabled intelligent machines to accomplish jobs that were previously assumed to be exclusively human in nature. AI टेक्नोलॉजी का मूल आधार एक एल्गोरिदम है, जिसने बुद्धिमान मशीनों को पूर्व में केवल मानवीय काम माना जाने वाले कार्यों को संपादित करने की समर्थता प्रदान की है। Being used for everything from speech and image recognition to outcome predictions and decision making, algorithms have become an inevitable part of AI. वाणी और छवि मान्यता से लेकर परिणाम पूर्वानुमान और निर्णय लेने तक ये एल्गोरिदम्स AI का अटूट हिस्सा बन गए हैं। They have made it possible for machines to gain insight from data, adjust to varied situations, and evolve with time. And as we continue to innovate new algorithms, we may anticipate AI to eventually grow smarter and more efficient in years to come. इन्होंने मशीनों को डेटा से संज्ञान प्राप्त करने, विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित होने और समय के साथ विकसित होने की संभावना को संभव बनाया है। और जैसे जैसे हम नए एल्गोरिदम का नवाचार करना जारी रखते हैं, हम एआई के आने वाले वर्षों में अधिक स्मार्ट और अधिक कुशल होने का अनुमान लगा सकते हैं। Now, to have a better insight of an algorithm, let's take an example of the step-by-step procedure for operating an ATM, which involves checking the PIN, entering an amount to withdraw, and cash dispensing. अब एक एल्गोरिदम के बारे में बेहतर समझ पाने के लिए आइए ATM को चलाने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का उदाहरण ले लें, जिसमें पिन की जांच की जाती है, नकदी निकालने के लिए राशि दर्ज की जाती है और नकदी वितरण होता है। As step 1, insert the ATM card and enter the PIN. If the PIN entered is incorrect, then incorrect PIN message is displayed and the card is ejected. As a next attempt, let's insert the ATM card into the machine and enter the PIN. Next, we are asked to enter the amount. If the balance is less than the amount, then
insufficient balance message is displayed and the card is ejected. As a third attempt, we insert the ATM card and enter the PIN. Next, we are asked to enter the amount. If the balance is more than the amount, then the cash is dispensed from the machine and the card is ejected. There are several types of algorithms, including brute force algorithm, divide and conquer algorithms, dynamic programming algorithms, and greedy algorithms, each with a unique approach to problem solving. Brute force algorithm involve checking every possible solution to a problem, while our divide and conquer algorithms break down a problem into smaller subproblems that are easier to solve. ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स समस्या के हर मुमकिन समाधान की पहचान करते हैं, जबकि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम्स द्वारा समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, जिससे समस्या को हल करने में आसानी हो जाती है. डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स यूज previously computed solutions to solve larger problems, while greedy algorithms make locally optimal choices at each step to find the global optimum solution. Dynamic programming algorithms पूर्व में हल की गई समस्याओं का उपयोग करते हैं ताकि बड़ी समस्याओं को हल किया जा सके, जबकि लालची एल्गोरिदम हर स्टेप पर स्थानिक श्रेष्ठ विकल्पों का उपयोग करके पूर्ण श्रेष्ठ समाधान ढूंढ सकते हैं. Mastering the various kinds of algorithms enables programmers to select the most efficient approach for solving a particular problem. कई प्रकार के एल्गोरिदम्स को संभालना प्रोग्रामर को एक विशेष समस्या को हल करने के लिए सबसे कुशल दृष्टिकोण का चयन करने की क्षमता प्रदान करता है. Now, let's have an understanding of flowchart. A flowchart is a graphical representation of an algorithm that uses symbols and diagrams to represent the steps involved in solving a problem. एक flowchart एक एल्गोरिदम का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है जो किसी समस्या को हल करने में शामिल चरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों और आरेखों का उपयोग करता है. Creating a flowchart involves mapping out each step in a process and identifying decision points to provide a clear overview of how the process works. Flowchart तैयार करने में प्रत्येक पदान्वयन कदम को मानचित्रण करना शामिल होता है और प्रक्रिया के काम करने का स्पष्ट संक्षेप देने के लिए निर्णय बिंदुओं की पहचान करनी होती है. Flowchart use symbols to represent different elements of an algorithm, such as start and end points, input and output decision points, and process steps. By using these symbols, flowchart provide a visual representation of the steps involved in solving a problem, making it easier for programmers to understand and develop solutions. इन संकेतों का उपयोग करके फ्लोचार्ट समस्या को हल करने में शामिल होने वाले कदमों का एक दृश्यात्मक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, जिससे प्रोग्रामर को समझने और समाधान विकसित करने में आसानी होती है. Referring to the same example of working of an ATM, here we see the flowchart representation of the steps followed for using an ATM for cash dispensing. By providing a visual representation of problem-solving steps, flowcharts make it easier for programmers to understand and develop solutions. समस्या के समाधान के चरणों का एक दृश्यात्मक प्रतिनिधित्व प्रदान करके फ्लोचार्ट बनाने से प्रोग्रामर्स को समझना और समाधान विकसित करना आसान हो जाता है. Although algorithms and flowcharts are both used to design programs, they cannot completely replace one another. The presented slide will show you the comparison between them. Despite the benefits of using
the algorithms and flowcharts, there are common mistakes that the programmers make during the development process. एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट का उपयोग करने के फायदे के बावजूद प्रोग्रामर्स डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान आमतौर पर गलतियां करते हैं. One of the most common mistakes is failing to plan the algorithm before starting to write the code. Another mistake is using too many decision points, which can make the program difficult to follow and debug. Additionally, using unclear or inconsistent naming conventions for variables and functions can make the code difficult to read and understand. By avoiding these mistakes, programmers can develop efficient and error-free programs. इन गलतियों से बचकर प्रोग्रामर सक्षम और त्रुटि मुक्त प्रोग्राम विकसित कर सकते हैं. Algorithms are the driving force behind the success of AI in various fields like engineering, finance, business, and many more. Engineering, वित्त, व्यवसाय और कई अन्य क्षेत्रों में AI की सफलता के पीछे एल्गोरिदम प्रेरक शक्ति है. They have enabled machines to learn from data, adapt to new situations, and even get better over time. And as we continue to develop new algorithms, we can expect AI to become even more intelligent and capable in the years ahead. ये मशीनों को डेटा से सीखने, नए परिस्थितियों में समायोजित होने और समय के साथ बेहतर होने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं. और जैसे हम नए एल्गोरिदम विकसित करते हैं, हम संभवतः आगामी वर्षों में AI को और भी बुद्धिमान और सक्षम देख सकते हैं. Hence, it's clear that algorithm will play an increasingly important role in shaping a future. इसलिए स्पष्ट है कि एल्गोरिदम हमारे भविष्य का आकार बदलने में आगे का एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे. AI could not exist without algorithms. The algorithms are responsible for processing huge amount of data, recognizing patterns, and making recommendations based on those patterns. They assist machines learn from past experiences and adjust their behavior accordingly, boosting their accuracy and productivity over time. एल्गोरिदम भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने, पैटर्न की पहचान करने और उन पैटर्न पर आधारित सिफारिशें देने के लिए जिम्मेदार होते हैं. वे मशीनों को पिछले अनुभवों से सीखने और अपने व्यवहार को तदनुसार समायोजित करने में मदद करते हैं, जो समय के साथ उनकी सटीकता और उत्पादकता को बढ़ाता है. So let's greet this amazing new technological era and see where it leads us. Thank you from TeamUPAI for watching this video lecture on algorithm and flowchart. TeamUPAI द्वारा प्रस्तुत एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट पर आधारित इस वीडियो व्याख्यान को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद. This video has been prepared by TeamUPAI purely for the purposes of education and awareness. The experts have prepared the content based on information available online and in print. Examples and illustrations have been taken from various books, magazines, and articles. We do not intend to infringe any copyright. Resemblance, if any, is purely coincidental. TeamUPAI believes in open educational resources. We do not claim any copyright on the study material prepared by us. We do not intend to sell or earn revenue out of it. This video can be used without distortion by anyone for educational purposes.
Srimati Monica S. Garg, Additional Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, is the initiator, motivator, and architect of this module. Right from the conception of the idea of AI literacy for all and organization of TeamUPAI, she has guided each member of the team in her inimitable style. We thank Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, for leading us. We also thank SCRT for supporting us. Thank you for watching this video and joining our mission on AI literacy for all. Thank you. Jai Hind.